the kind words and introduction, Kajal. I welcome you all in this webinar today. And today is World Mental Health Day. आज World Mental Health Day है. And there cannot be a better occasion than this to talk about mental health. The world has just been partially recovering from an unprecedented public health crisis called the COVID pandemic. And the kind of disease, death, isolation, suffering it entailed that has seriously impacted the mental health of people world over. कोविड पैंडेमिक के बाद मेंटल हेल्थ में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए केसेस, डिप्रेशन से जुड़े हुए केसेस बढ़े हैं. अगर मैं WHO की बात करूं तो there is 25% increase in global prevalence of depression and anxiety post COVID pandemic. कोविड पैंडेमिक होने के बाद 25%, एक चौथाई लगभग इंक्रीज हो गया है पूरी दुनिया में डिप्रेशन और एंजाइटी के अंदर. Now the problem with mental health disorders is not just the disorder themselves, but a whole lot of stigma and lack of awareness around them that makes it very difficult for people who are suffering with mental health issues to seek help, to talk about it. I would like to tell you an incident which happened around the time when I was in Safdarjung Hospital, long time back. I got a call from the burns department in Safdarjung. When I went to see the patient, she was a lady who was 90% burnt because she made a suicide attempt. Now, when I reached there, she was with folded hands. She was murmuring something like, "मुझे बचा लो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे परिवार का क्या होगा, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे." When I tried to talk to her, she could not talk. She just kept murmuring these words, these sentences. Then I asked her relatives to move out and I interviewed her. After some time, she opened up and she started talking. She was not feeling guilty about the suicide attempt. She was feeling guilty about the fact that she was having some intrusive thoughts regarding gods, sexual thoughts regarding gods. She used to think this is a curse from God. ये भगवान का कोई श्राप है मेरे ऊपर जिसकी वजह से मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं. She started remaining sad. वो दुखी रहने लगी. Then her family members took her to AIMS. वहां जाके she could not speak about it because of the shame कि what people would think कि I am having these kind of thoughts. मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे. She could not tell the doctor. वहां से उन्होंने दवाई ली and then she took the medication for some time. She could not find any relief. तो उसका विश्वास और पक्का हो गया कि this is definitely some curse from God. This is not a disorder. If it cannot be treated in AIMS, then this cannot be a disorder. And after that, she thought that because of these kind of negative thoughts that she's thinking, there might be some problem for her family. Gods will be angry with the family as well. So she decided to end her life. और उन्होंने अपने को suicide करने के लिए आग लगा ली. Now when I told her that this is not a curse, it was a disorder called obsessive compulsive disorder जिसकी वजह से आपको ये thoughts आ रहे थे. So she felt relieved
and her next sentence was, अगर ये बीमारी थी तो डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मेरे से गलती हो गई. I had no answer for it. मेरे पास कोई जवाब नहीं था. 2 days later, I came to know that she died. Now the thing to understand is this, that she did not die because of the obsessive compulsive disorder or the mental health issue. She died because of the stigma. She died because of lack of awareness. She died because she could not express herself because of shame, because of the myths associated with mental health issues. That is why it is very important to understand regarding mental health issues, so that people can understand it, people can seek help, people can heal themselves. So today we will be talking about certain myths which are widely prevalent in our society. हमारी society में mental health और illness को लेकर के इतने सारे myths prevalent हैं that these are the myths that are obstacles to in seeking treatment. People do not seek help because of these myths. People do not seek help because of lack of awareness. That is why it is important to raise this awareness, and that's why we are talking about it here. ताकि और लोग उस बेचारी महिला की तरह जिसकी उस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से डेथ हो गई, पता नहीं हजारों लाखों कितने लोग ऐसे ही सफर करते रहते हैं, बात नहीं करते, हेल्प नहीं ले पाते. तो अगर वो अवेयरनेस आएगी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, तो वो लोग आगे आ पाएंगे, वो लोग मदद ले पाएंगे और ट्रीटमेंट से ठीक भी हो पाएंगे. तो अगर मैं मिथ्स की बात करूं, मिथ्स का मतलब है भ्रांतियां, समाज में प्रचलित भ्रांतियां, समाज में जो हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेकर के गलत अवधारणाएं जो प्रचलित हैं, दीज आर कॉल्ड मिथ्स. So the first myth that I would like to tell you is that mental health disorders cannot affect me. They are not so common. मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं मुझे प्रभावित नहीं कर सकती. मानसिक स्वास्थ्य विकार इतने आम नहीं है. मुझे, मेरी फैमिली को नहीं होगा, जिसको होना होता है होगा, हो जाएगा. बट द फैक्ट इज दैट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आर very very common. 950 million people worldwide suffer from mental illness every year. 950 million का मतलब है almost 1 billion. 1 in every 8 people in the world live with a mental health disorder. हर 8 में से एक व्यक्ति को मेंटल हेल्थ समस्याएं होती हैं. पिछले 3 दशक में 50% का इंक्रीज आ गया मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में पूरी दुनिया के अंदर. If we talk about the Indian scenario, India has one of the highest prevalence of mental illness globally. हमारे देश में काफी हाई प्रेवलेंस है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का. अप टू 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन, अराउंड 197 मिलियन, 20 करोड़ के आसपास लोग को जो है वो किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इश्यू से स्ट्रगल कर रहे हैं. 1 in every 7 Indians suffers from some depressive or anxiety disorder. हर 7 में से एक भारतीय को किसी ना किसी तरीके का डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर है. और हर साल लगभग 2 लाख लोग हमारे देश में सुइसाइड से जान गंवा बैठते हैं, जिनमें से बहुत सौ को डिप्रेशन या कोई जुड़ा हुआ मानसिक रोग होता है. It's an interesting fact that WHO has estimated that India's economic loss because of the prevalence of mental health disorders is $1.03 trillion between 2012 to 2030. इतना लॉस हमारी इकोनॉमी को होगा because of mental health disorders. Another myth is mental health disorders are only in your head. These are not real illnesses. अक्सर लोग ये कहते पाए जाते हैं कि ये तो तुम्हारे दिमाग में है, इससे बाहर निकलो, ठीक हो जाओगे, सिर्फ आप सोचते हो ऐसा.
Fact is, this is a very interesting cartoon from Nami. आप इसको देखें. ये कहता है, the mental illness is just in your head. One person is saying to another person. That person says to the other person, don't worry, the drowning is just in your chest. अगर आप डूब रहे हैं तो सिर्फ छाती में डूब रहे हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं उसकी? आपके लंग्स में तो पानी भर रहा है. तो दिस इज हाउ पीपल लुक एट पीपल विद मेंटल इलनेस, कि तुम्हारे दिमाग में इससे बाहर निकलो. उसको बीमारी मानते ही नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं. फैक्ट ये है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आर एज रियल एज फिजिकल हेल्थ डिसऑर्डर. जैसे फिजिकल बीमारियां होती हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी होते हैं. और if if the mental health disorder is existing with the physical health disorder, it makes it worse. अगर फिजिकल हेल्थ डिसऑर्डर आपको कोई है, कोई फिजिकल बीमारी है और साथ में कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी है, तो वो फिजिकल बीमारी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, वो भी वर्सन होती चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, in case of cardiovascular disorders, people who have cardiac disease, जिनको cardiac problems होती हैं, 25 to 45% of those people also have depression and anxiety. 25 से 45% में डिप्रेशन और एंजाइटी भी पाया जाता है. If we talk about respiratory disorders, COPD, asthma, 50 to 60% people have anxiety or depression along with the respiratory disorders. इनके साथ साथ अगर लंग्स की कोई बीमारी है तो उसके साथ 50 से 60% लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी होता है, और वो उस बीमारी को और खराब कर रहा होता है. पेट की बीमारियों के साथ सीलिक डिजीज या पेप्टिक अल्सर्स में डिप्रेशन, IBS, OCD is very common. डायबिटीज में, डायबिटीज which is so common these days, 30% people with diabetes have depression or anxiety. Thyroid problems, epilepsy, especially temporal lobe, strokes, paralysis जिसको बोलते हैं, उसमें 30% में डिप्रेशन होता है. Alzheimer's disease, Parkinson's disease, up to 50% people have depression and other psychiatric manifestations. So you can see how common the mental health issues are, mental health disorders are, and how commonly they occur with other physical health disorders also. So that's why it is very important to understand that these are not just in your head. ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, ये असल में बीमारियां हैं. Another myth is mental health disorders do not happen to children. बच्चों में तो मानसिक रोग होते ही नहीं. वो जो भी होता है उनकी आदत होती है, उनकी शैतानी होती है, मानसिक रोग उनमें नहीं होते. ऐसा एक मिथ है, which is wrong. फैक्ट है कि over 20% of children aged 9 to 17 have a diagnosable mental or addictive disorder that causes at least some impairment. 20% से ज्यादा बच्चों को जिनकी एज 9 साल से लेकर 17 साल है, कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यू या एडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. Half of all mental health disorders show first signs before a person turns 14 years old. 14 साल की उम्र से पहले आधे से ज्यादा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या बीमारियां, मानसिक रोग वो शुरू हो जाते हैं, उनके साइंस आने लगते हैं. डिप्रेशन इज अकरिंग अर्लियर. अब जल्दी हो रहा है डिप्रेशन, ज्यादा जल्दी उम्र में हो रहा है. और एडोलेसेंट्स, टीन्स जो हैं, अगर उन जिनको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उनमें से 7% माइट कमिट सुइसाइड इन यंग एडल्ट ईयर्स. वो जवान होने पर उनमें से 7% सुइसाइड कर लेते हैं. तो ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट हैपनिंग टू किड्स और चिल्ड्रन. इट्स फेयरली कॉमन देयर एज वेल. Another very widely prevalent myth in our society, as you can see in this picture, आप गैस कर लोगे, शादी कर दो ये ठीक हो जाएगा. If somebody is having a mental health problem, everybody advises, इसकी शादी कर दो ये ठीक हो जाएगा, इसकी शादी कर दो ये ठीक हो जाएगी. Now just think, if somebody is having diabetes or cardiac problem or any other disease, physical disease, will it get better by getting that person to get married?
उसकी शादी करने से जब फिजिकल हेल्थ डिसऑर्डर्स ठीक नहीं होते तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कैसे ठीक हो जाएंगे? तो ये एक मिथ है। सच्चाई ये है, शादी मेंटल इलनेस का इलाज नहीं है, जैसे शादी किसी फिजिकल इलनेस का भी इलाज नहीं है। मैरिज इज नॉट अ क्योर फॉर मेंटल इलनेस लाइक इट्स नॉट अ क्योर फॉर एनी अदर फिजिकल इलनेस। So it's a myth. Another very widely prevalent myth in our rural areas, semi-urban areas, even urban areas, in our country, it's widely prevalent that mental health disorders happen because of some supernatural power or because of some ghosts or evil spirits. This is a widely prevalent myth. Because of this myth, it takes people 7 to 11 years sometimes to come for mental health treatment. 7 से 11 साल लोग इधर उधर अंधविश्वास में झाड़ फूंक कराने में निकाल देते हैं। उसके बाद जाकर के पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता है। फैक्ट ये है कि मानसिक रोग किसी ऊपरी ताकत या भूत प्रेत से नहीं होते। Mental illness do not happen because of ghosts or supernatural reasons. So it is very important to identify the signs and symptoms of mental illness in your loved ones or the people around you or in yourself and seek help as early as possible. Another myth which is quite prevalent is that if you will live with a person with mental illness, you will also develop mental illness, as if mental illness is communicable disease. मानसिक रोगी के साथ रहेंगे तो आप भी मानसिक रोगी हो जाएंगे, which is wrong. It is not these are not communicable disorders, and they do not happen just because you live with someone who has a mental health issue. मानसिक रोगी के साथ रहने मात्र से किसी को मानसिक रोग नहीं होता. Mental health disorders are not communicable disorders. ये भी एक मिथ है. Now coming to the point, why and how mental illnesses occur. वो किसी भूत प्रेत से नहीं होती हैं, किसी ऊपरी ताकत से नहीं होती हैं, किसी के साथ रहने से नहीं होती हैं, तो होती कैसे हैं? Why and how mental illnesses occur. So see, our brain is the most complicated organ on this earth. That's why the disease of the brain or the mind are also very complicated and complex. इतनी आसान नहीं है कि फलाने मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाएगा या इस वायरस से कॉमन कोल्ड हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा. इतना आसान नहीं है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का कॉज, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स हैं. So the cause of mental illness is multifactorial. There are biological reasons, there are psychological reasons, there are social reasons. ये तीन चीजें मिल करके किसी व्यक्ति में कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पैदा करती हैं. So if you look at the hereditary or genetic susceptibility, there are genetic factors causing mental health issues. There are certain chromosomal regions, linkage that are common in certain mental health disorders like autism, schizophrenia, bipolar, ADHD. They share common chromosomal regions. So there's not a single factor which is responsible for it. There are a combination of genetic factors. Neurochemical imbalance can also can be a causative factor in causing mental health issues. Changes in dopamine or serotonin and other neurochemicals. कुछ neurochemical imbalances होते हैं brain में. Psychological factors also play a role. Innate temperamental styles, personality structure, किस तरीके का व्यक्तित्व है आपका, coping methods, what are your coping methods, cognitive errors, unconscious defense mechanisms, these also play a role in causing a mental health disorder. Social factors में trauma, negative life events, abuse and losses. As we have recently seen with COVID pandemic, it was a very traumatic event all over the world, and that's why the cases of mental health disorders have gone up. Another prevalent myth is that mental illness patients are often violent.
मानसिक रोगी हिंसक होते हैं, which is also a wrong fact. The fact is, most of the acts of violence world over are caused by common people who are considered to be normal, who do not have a mental health issue. Normal people indulge in more violent activities throughout the world. हिंसा के अधिकतर कार्य सामान्य लोगों द्वारा किए जाते हैं, जिनको हम नॉर्मल कहते हैं, जिनको हम मानसिक रोगी नहीं कहते. The fact is, people with mental health disorders are often the victims rather than the perpetrators. Another prevalent myth is, वह अपने विचार छोड़ता ही नहीं है. As if the person is deliberately mentally ill. He or she doesn't change or leave his or her abnormal thoughts. ये भी एक myth है. The fact is, विचार रोगी के काबू में नहीं होते, बल्कि सच्चाई तो यह है कि विचार रोगी को अपने काबू में ले लेते हैं. The thoughts and behavior are because of the illness and not deliberate. जो symptoms हैं mental health disorder के, वो जानबूझ के किए हुए symptoms नहीं हैं. These are the symptoms and the patient is helpless. Another myth is, mental health disorders happen to people who are weak and you can snap out of it if you try hard enough. मानसिक रोग उन लोगों को होते हैं जो कमजोर होते हैं, जिनका कैरेक्टर कमजोर होता है, और अगर आप कोशिश करें तो आप इससे बाहर आ सकते हैं. यानी ये बीमारी नहीं है, आप इससे बस कोशिश करिए और बाहर आ जाइए. ये भी एक मिथ है. फैक्ट है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैव नथिंग टू डू विद बीइंग लेजी और वीकनेस ऑफ कैरेक्टर. मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का आलसी होने या चरित्र की कमजोरी से कोई लेना देना नहीं है. Many people need treatment to get better. बहुत सारे लोगों को इलाज की जरूरत होती है, और जैसा हमने डिस्कस किया कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं. बायोलॉजिकल हैं, जेनेटिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, सोशल फैक्टर्स हैं. Now, just it's an interesting thing. Would you call someone with asthma or cancer or stroke a weak character or lazy? किसी व्यक्ति को अगर एस्मा हो, कैंसर हो, स्ट्रोक हो या पैरालिसिस हो, तो उसको आप वीक कैरेक्टर का या लेजी कहेंगे? तो मानसिक रोग अगर किसी को है, तो वह व्यक्ति कैसे वीक या लेजी हो गया? तो पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को इस बारे में सोचने की जरूरत है. Another widely prevalent myth is that there is no treatment for mental health disorders. Once you are ill, you are mentally ill for life. मानसिक रोगों का कोई इलाज नहीं है. एक बार जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप जीवन भर मानसिक रूप से बीमार रहते हैं. This is again a myth. It's not a fact. The fact is, mental illness is treatable. मानसिक रोगों का इलाज संभव है, जिसमें दवाइयां हैं, साइकोथेरेपी है. अगर हम बात करें स्किज़ोफ्रेनिया की, which is considered a very severe mental illness, just look at the outcome of schizophrenia. 20% people, they fully recover, while 35% people, they have recovery and relapse. That means वो एक बार ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में दोबारा से इलनेस कई बार आ जाती है, फिर वो दवाई लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं. 35% have incomplete recovery and 10% they do not recover despite treatment. तो अगर हम, if you look at this outcome, 20% plus 35%, 55%, more than 50% people with schizophrenia can also recover with treatment, which is a quite good outcome in terms of treatment. आप इसको compare कर लें कैंसर के साथ, बाकी cardiovascular disorders के साथ, तो the recovery is remarkable, even in schizophrenia, which is considered a very severe mental illness. बाकी रहे depression, anxiety, and other mental health disorders, उनमें तो रिकवरी और भी अच्छी होती है. इसलिए इस बात को समझें कि मेंटल इलनेस इज ट्रीटेबल, और ट्रीटमेंट से मोस्ट ऑफ द पेशेंट लीड अ क्वालिटी लाइफ. Most of the mental illnesses can be treated effectively in community or on OPD basis, and most of the patients need not be hospitalized.
ज्यादातर लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती और ओपीडी बेसिस पे ही ट्रीटमेंट हो जाता है. Most of the patients live a better quality life with treatment. अधिकांश रोगी उपचार के साथ बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन जी पाते हैं. Treatment benefits are usually evident from a week in mild illness to 6 weeks in moderate to severe mental health disorders. 1 से लेकर 6 हफ्ते का टाइम लगता है ट्रीटमेंट के रिजल्ट आने में. उपचार के लाभ आमतौर पर हल्की बीमारी में 1 सप्ताह से लेकर मध्यम से गंभीर बीमारियों में 6 सप्ताह तक लग जाते हैं. Mentally ill patients too need your empathy, understanding and care along with proper treatment. मानसिक रूप से बीमार रोगियों को उचित उपचार के साथ आपकी सहानुभूति, समझ और देखभाल की जरूरत होती है. Another widely prevalent myth in our society is regarding the medications for mental health disorders. That medications for mental health disorders are just sleeping pills. Medications for mental health disorders are addictive. यानी मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं वो सिर्फ नींद की गोलियां हैं और मानसिक रोगों की दवाओं को आदत पड़ जाती है. This is a widely prevalent myth. Fact is, medications for mental health disorders are not sleeping pills. मानसिक रोगों की दवाएं नींद की गोलियां नहीं हैं और मानसिक रोगों की दवाओं की आदत नहीं पड़ती. Only sleeping pills are addictive. केवल नींद की गोलियों की आदत पड़ती है. इसलिए नींद की गोलियां आपको लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए. जो बाकी की दवाइयां हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए, they are not addictive. उनकी आदत नहीं पड़ती. Just think, medicines for blood pressure, diabetes, thyroid, Parkinson's, they are not addictive, right? And medicines for mental health disorders, they're addictive. This is how our society thinks. This is how we think. And that needs to change. आपको कब दवाई लेने की जरूरत होती है? If your disorder, mental health disorder, is not improving with lifestyle changes or with counseling, then you may have to take mental health medicines for mental health disorders. Or if the disorder is so severe from day one that it cannot be managed without medications. बिना दवाइयों के ठीक ही नहीं हो सकता हो, या फिर सिम्टम्स बहुत सिवियर हों, या फिर आप प्रयास कर रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर रहे हैं, थेरेपी या काउंसलिंग भी ले रहे हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो, तब दवाइयों की जरूरत होती है. उसमें भी आई हैव टोल्ड यू, मैंने बता दिया है कि सिर्फ स्लीपिंग पिल्स आर एडिक्टिव, बाकी दवाइयां एडिक्टिव नहीं है. अपने डॉक्टर से बात करें और अपने लिए उचित ट्रीटमेंट लें. एक और मिथ है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड. मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोका नहीं जा सकता. प्रिवेंशन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी फॉर मेंटल हेल्थ, which is also a myth and it's wrong. Fact is, because mental health problems are complex problems, so we need multifactorial, an approach, multi-pronged approach to deal with it, to make prevention a possibility. Like bringing mental health awareness is the first step. By addressing known risk factors such as exposure to trauma, if you can address that in time, if that trauma would lead to a mental health disorder, that can be addressed. Propagation of healthy coping skills right from childhood, बचपन से ही अच्छी coping skills सिखाए जाएं. Early detection and treatment, जितना जल्दी डिटेक्शन हो प्रॉब्लम का और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, उतना ही डिसऑर्डर का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है. Community participation as a resource and improving and stabilizing the socio-economic situation of the society. जितना सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा होगा, उतना लोगों की मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी. Why we need to bother about mental health is that even these days, in the current times, more than 75% of people remain untreated. जिनको
मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनमें से 75% लोग आज भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या नहीं ले पाते हैं। कारण क्या है? Poor awareness about symptoms of mental illness. They don't know, like the incident, the unfortunate incident I told you about, that lady. She was not aware that she was having OCD. So people don't have awareness regarding these issues. Poor awareness, myths and stigma, they stop people from seeking help and treatment. Lack of knowledge on the treatment availability and potential benefits of seeking treatment. लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि ट्रीटमेंट भी हो सकता है या ट्रीटमेंट से फायदा भी हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट लेते नहीं या ले नहीं पाते। और भी है, लाइक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है हमारे देश में। Only 9,000 plus psychiatrists and handful of other mental health professionals are there for 1.4 billion population. Compare that with America. There are more than 50,000 psychiatrists in America for a population which is 1/5 of our country. As per WHO, countries like India devote less than 1% of their health budgets to mental health compared to 10% to 18% in other countries. तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर भी नहीं है। Stigma hurts much more than the disease. As we discussed initially, that lady was not killed by OCD. She was killed by lack of awareness and stigma. The stigma can be of two types. One is public stigma, where people have a certain negative attitude, prejudice, and discriminatory attitude towards people with mental health issues and mental health disorders. And self-stigma, where the people who have mental health issues, they have negative attitude towards their own illness. Stigma hurts and it stops people from seeking treatment. And they keep on suffering in silence. So the stigma needs to go. So take home message today is mental health. Mental illnesses are like any other physical illness which are required to be treated properly and they are treatable. मानसिक रोग भी अन्य फिजिकल रोगों की तरह ही हैं जिनका इलाज संभव है और उनका इलाज करवाना चाहिए. We need to respect the dignity of a mentally ill patient as we respect a physically ill patient. हमें वही सम्मान, वही सहानुभूति एक mentally ill patient के लिए भी रखनी है जैसी हम physically ill patients के लिए रखते हैं. The stigma and myths associated with mental health issues must be removed. The days of mind-body dichotomy are over. Let's give mind the importance it deserves. Let's heal holistically. Mental health deserves salience in overall healthcare and policy making. So ये बहुत important है कि as a society हम साथ में आए, mental health से जुड़े हुए stigma को कम करें, awareness को बढ़ाएं, ताकि जो लोग mental illness से प्रभावित हैं, वो आगे आ सकें, express कर सकें, treatment ले सकें और एक अच्छी जिंदगी जी सकें. Thank you so much.